we have with us today Advocate Govind Bali. Advocate Bali is practicing on the Armed Forces Tribunal Delhi Principal Bench, and he works a lot in the disability matters for the Armed Forces personnel. आज हमने इनको invite किया है for a very specific discussion on disability, wherein the disability has been caused due to a battle casualty or a war wounded kind of a situation. उसके और क्या बारीक पहलू हैं, इनके ऊपर आज चर्चा करेंगे एडवोकेट बाली से. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एडवोकेट बाली. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. तो मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगा कि जो कॉम्बैट रिलेटेड इंजरी है, ये कैसे ऑफिशियली डिफाइंड है एज पर द मिलिट्री रेगुलेशंस, एंड व्हाट एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू कैटेगराइज इंजरी एज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉम्बैट और वॉर. सर बेसिकली अगर हम वॉर की बात करते हैं तो ऐसे जब भी वॉर तो है ही नहीं सर. एज पर द डेफिनेशन ऑफ वॉर देयर आर नो वॉर्स गोइंग ऑन. सो इट इज कॉल्ड ऑपरेशनल इंजरी सर और बैटल कैजुअलिटी इन जनरल टर्म्स. अब इसमें डिफरेंशिएशन क्या है सर? बैटल कैजुअलिटी डज नॉट कैटेगरिकली मीन दैट देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन. Battle casualty means that if there is an operational role in which you've gone or operational training in which you have gone, and due to that training you've sustained an injury, sir, then it will be called as battle casualty. इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं सर. जनरली एक सी ऑफ आई होनी चाहिए सर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए ऑफ इंजरी. देयर हैज टू बी अ इंजरी रिपोर्ट दैट हैज टू बी इनिशिएटेड. Then there has to be a severity certificate that has to be given if you've not been given the battle casualty status, sir. Up generally, battle casualties could be anything, sir. Battle casualty could be that you were doing a rescue operation Siachen as you were part of the training establishment, sir. And एक avalanche आया और आपकी इंजरी हो गई. In that there was no war going on as such, but Siachen में जो employment है, it is a central government notified operation, sir. So operational employment के अंदर अगर कोई इंजरी होती है, sir, that is battle casualty. For example, an individual is posted to very high altitude place जहाँ पे frostbites common है sir. So frostbite will also be considered as a battle casualty, sir. It is not that it will be considered as a normal disability. It is a disability which has been caused in field at high altitude due to the operational requirements at that particular area, sir. So वो भी battle casualty मानी जाएगी. ओके, सो जो मुझे समझ आया, आप ये बोल रहे हैं कि जो एक्टिव ऑपरेशंस में किसी तरह की हर्ट्स या इंजरीज या सिवियर प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिकली, उन्हें आप बैटल कैजुअलिटी में काउंट करते हैं, और उसको एस्टैब्लिश करने के लिए प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नीड्स टू बी कंडक्टेड. सर बेसिकली अगर हम कहें एक्टिव ऑपरेशंस, so that would not suffice the issue, sir. Active operational training was also part of it, sir. So for example, अगर फील्ड फायरिंग के लिए कोई महाजन गया है सर और वहां पे किसी को इंजरी हो जाती है, now that is not a operational case as such. मतलब it is not a operational thing that is going on. There is no operation going on there, but it's a training operation wherein you are trying to be trained to be competent to run the situational needs of the army, sir. तो उसके अंदर भी अगर कोई इंजरी होती है, in that case also it is battle casualty, sir. C of I is not a compulsion, sir. It is one of the elements that need to be there. In certain cases जो brigade commander हैं sir, अगर वो इंजरी रिपोर्ट इनिशिएट कर देते हैं तो वो भी सफाइस कर जाता है मैटर को सर. और एक जो पॉजिटिव पार्ट है सर बैटल कैजुअलिटी का, इसमें अगर आप S1 के बाद S2 हो सर, इफ यू शेप 2 and you're not shape 3, then you can be promoted in the post of a commanding officer in a proper active role other than the administrative role, sir. You can be commanding a unit in case of battle casualties, sir. ओके, तो आप ये बोल रहे हैं कि इंजरी रिपोर्ट भी कैन ऑल्सो बी अ डॉक्यूमेंट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी. इसके अलावा मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि एक इंजरी कोड ये इस्टेब्लिश करने में कि ये कोई बैटल कैजुअलिटी है या जैसा आपने बोला ऑपरेशन या ऑपरेशनल ट्रेनिंग के दौरान है, इसमें विटनेसेस का क्या रोल है, एंड हाउ इज देयर टेस्टिमनी कंसिडर्ड in the assessment of injury as due to operations or operational training? सर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सिट्रेप है सर, जो यूनिट्स लिखती हैं. जनरली प्रॉब्लम क्या होती है सर, जो जब यंगस्टर्स होते हैं लोग, when they join the army, they don't know the legalities and nitty-gritties of the issue, sir.
तो जर्नली सिट्रेप्स खराब हो जाती हैं या मिलती नहीं है उनको क्लेम करने के लिए, तो सिट्रेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट एवरीवन शुड हैव ऑफ द इंजरीज. Injury for that matter, for example, you're on high altitude and you get a heart attack during an operational employment, sir. उसका अगर सिट्रेप बना हुआ है, that also qualifies for battle casualty. So basically, SITREP is a very important document, sir. और अगर SITREP नहीं है, sir, then a letter has to be issued from the individual where you were posted at that time. For example, it is not the same individual of the brigade, but the individual who was above you. जो SRO थे आपके या brigade commander थे, उनके साथ से एक writing में आना चाहिए. Yes, this person had basically gone through an injury at this particular period of time when he was posted at this place. So that is also a document that can be attained to establish the battle casualty. As far as witnesses are concerned, sir, इंजरी रिपोर्ट के अंदर जो ब्रिगेड कमांडर है वो अपने साइन एंड सील के अंदर जनरली इंजरी रिपोर्ट इनिशिएट कर देते हैं या सीओ कर देते हैं, तो उसमें विटनेसेस एज सच नहीं होते थे. बट अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है तो विटनेसेस हैं, तो उनका रोल ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट दैट देयर वाज एन इंजरी. All right. Is there a mechanism for re-evaluation of injuries or disabilities जो पहले बैटल कैजुअलिटी के तौर पर नहीं ली गई, and what are the circumstances under which such a re-evaluation can be requested by the injured person? So basically re-evaluation is not an option. Severity certificate is an option. So for example, आपको एक अस्थमा का इश्यू हुआ सर हाई ऑल्टीट्यूड में, उस टाइम पे जो भी आपकी सर्विस रही, उसके बाद सर ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू वेंट डाउन टू अनदर पोस्टिंग, आपका अस्थमा का जो लेवल है, डेसिबल्स है, वो बढ़ गए सर. In that case, what will happen, sir, that a severity has come into that. So when that severity certificate is given, then you can claim that yes, my disability has increased, therefore the percentage of my disability has to be increased. But sir, there is another point that needs to be identified here is battle casualty का अगर आपको certificate मिला हुआ है, तो 20% या 1% is same. Even if your disability is 1%, sir, it will be straight away broadbanded to 20%, sir. And you will get the battle casualty का जो pension है, sir, disability का, वो आपको मिलेगा, sir. If that certificate exists, there is a army order on that, sir, which can be checked on various places. And उसके अंदर clear है, sir, कि मतलब वो broadbanding is there. That mandate is already there, sir. So basically, जो डिसेबिलिटी पेंशन है और बैटल कैजुअलिटी है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है सर. Okay. So disability pension basically talks about a disability which happened during any period of time, irrespective of the operational duty or non-operational duty, sir. During a war or a training period is not mentioned there in disability pension, sir. डिसेबिलिटी पेंशन इस कॉन्सेप्ट पे चलता है सर कि जब आप फौज ज्वाइन करते हो, आप शेप वन हो. बैटल कैजुअलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप ऑपरेशनल ड्यूटी कर रहे थे या ऑपरेशनल ट्रेनिंग कर रहे थे, उस टाइम पे आपको कोई इंजरी हुई, और वो जो इंजरी हुई उसके कारण आपको वूंड हुआ या कोई कोई भी इशू हुआ, दैट इज अ फिट केस टू बी अ बैटल कैजुअलिटी सर. ओके. सो मेरा आपसे अगला सवाल जो है वो ये रहेगा कि अगर कोई बैटल कैजुअलिटी है, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, जैसे आपने बोला सिट्रप है, इंजरी रिपोर्ट है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, सो how can someone ensure that these measures are in place, and the relevant information related to the injury is accurately recorded and considered in the assessment? सर जनरली जो इंजरी रिपोर्ट्स फील्ड में होती हैं सर, फील्ड में जब इंजरी होती है सर, तो जनरली जो सीओ ऑफ द यूनिट होते हैं इन्फेंट्री यूनिट्स में या फिर वर्कशॉप्स में, जो ओसी वर्कशॉप होते हैं ईएमई वगैरह में, it is the responsibility of that commanding officer or officer commanding to come up with these relevant documents. It is the unit's responsibility to issue these documents, sir. तो बेसिकली यूनिट से मांगना, आप राइटिंग में मांग सकते हो कि ये चीज जो हुई थी, आई नीड द कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स एंड इट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू मी बिकॉज आई वांट टू इनिशिएट अ केस फॉर बैटल कैजुअलिटी. सो बेसिकली उसके चैनल के थ्रू जा सकता है सर. सेकेंड इज, अगर इंजरी रिपोर्ट इशू हुई है सर, तो उसकी एक कॉपी आपको दी जाती है सर. एंड सिमिलरली अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है सर, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की फाइंडिंग्स आपको दी जाएंगी सर.
So basically, it is on the individual to keep those documents safe. मैं आपसे एक बिल्कुल ऐसा सवाल पूछूंगा जो शायद पता नहीं इंडियन आर्म फोर्सेस में भी है या नहीं है, बट मैंने जो एक्सटर्नल सोर्सेज से देखा है या समझा है, is about the mental health issue. So, are there any provisions in the Indian Armed Forces where injuries which involve mental health issues resulting from operations or combat experiences? I mean, is there any recognition for those? And if yes, then So, what so is the criteria? if you're talking about PTSD, सर, जो यूएस आर्मी बहुत अच्छे से फॉलो करती है, उसका कॉन्सेप्ट इंडियन आर्मी में अभी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा सर. मतलब ऑन पेपर तो नहीं है. और जर्नली सर इंडियन आर्मी के अंदर या फॉर दैट मैटर इंडियन अदर फोर्सेस आल्सो सर, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उनके अंदर भी सर एज सच मेंटल इश्यूज को सर्विस से जोड़ के नहीं देखा जा रहा है सर. बिकॉज उनका कहना ये होता है कि द इंडिविजुअल इज मेकिंग एक्सक्यूजेस बिकॉज ही डज नॉट वांट टू डू सर्विस, जो जर्नली रेलेवेंट रिलीज या इनवैलिडेशन बोर्ड्स में देखा गया है सर. तो बेसिकली पीटीएसडी का जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है. बट देयर आर सम केसेस सर, बट वो एज सच प्रेसिडेंट्स नहीं माने जा सकते, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स वो पोस्टेड टू सियाचिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So they started having some kind of hallucinations or they had memory losses and all that. But they were not evaluated by psychiatrists for that, sir. वो लोगों की जो रिपोर्टिंग हुई, that reporting was with respect to neurologists. And neurologists ने रिपोर्टिंग करी कि due to service conditions they had memory losses and everything, sir. So basically PTSD is not recognized, sir, which is a very मतलब sad part of it, sir. Because operational issues होते हैं, sir. मतलब certain people go for a very bigger operational roles. There are people, there have been certain cases of CRPF, those who are working in Naxal affected areas. They've got severe health issues which are basically related to their mental health, but they are not considered as such. Sir. तो पीटीएसडी का कॉन्सेप्ट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं. दूसरा इशू पर आते हैं. आपने बताया जैसे कि जो वॉर वुंडेड या मतलब ऑपरेशन इंजरीज की वजह से अगर S2 तक की कैटेगरी है, सो दे आर गिवन कमांड्स, इवन ऑपरेशनल एंड एक्टिव कमांड्स. इसके अलावा हाउ डज द रिकग्निशन ऑफ अ इंजरी और डिसेबिलिटी एज बैटल कैजुअलिटी और ऑपरेशन इंजरी impact the serving personnel as well as the veterans in terms of any specific benefits they get? सर बेसिकली एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो किसी को पता नहीं है. तो बेसिकली जब हम लोग बैटल कैजुअलिटी की बात करते हैं, इफ यू आर बैटल वुंडेड एंड यू गॉट अ वुंड सर्टिफिकेट और अ बैटल injury certificate, sir, then education of your children, whether they're studying in a private college or in a school or anywhere, sir, it has to be borne by the army, sir. AG's ब्रांच के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं लोग, एंड उसके थ्रू आपका पूरा जो एजुकेशन का काम है सर, एजुकेशन की फीस है, वो आर्मी बियर करती है सर. वन इज दैट. सेकेंड इज सर, जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं जो बैटल कैजुअलिटी हो जाते हैं, they cannot be rejected in the PC board if they've applied for PC, sir. So there is a written norm on that, that any individual who's been war wounded has to be retained in the army till the time he is capable of doing some resourceful job, sir. लास्ट सवाल जो है मेरा वो ये है कि are there any additional disability or pensionary benefits other than the regular disability pension to individuals who are categorized as battle casualty? Sir, battle casualty individuals get a higher pension, sir. One is that. Like disability pension, there is this pension is also tax free, sir. Battle casualty की जो pension है, that is tax free, sir. Then there are certain things more, sir. For example, there are amputations. Then you're also covered with People with Disabilities Act, sir, in the civil employment. Then there are reservations in the civil employment for people with war wounded medals, sir, or with battle casualty status. तो देर आर बेनिफिट्स अवेलेबल अगर जो सोल्जर्स अनफॉर्चुनेटली देश की सेवा करते हुए इस तरह की पर्सनल लॉसेस को सफर करते हैं और when they lose a limb or there are severe injuries,
they have benefits available. I think going to the AG's branch and finding out those benefits is going to help them. Sir, AG's branch also has a booklet which is available in public domain, which talks about the benefits of battle casualty individuals. Sir. On the PIV website also they've published the benefits. Ministry's website, Defense Ministry's website is also talking about the benefits to disabled soldiers. बेसिकली सर जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था सर, एक्चुअल में जब भी इमरजेंसी कमीशन होता था सर, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे और जवान से जिनकी बहुत बुरी बुरी इंजरीज थी सर. They lost both limbs or all limbs in certain cases. So for their rehabilitation, sir, during Kargil war, civil employers who were basically semi-government employers like ONGC, GAIL, and other organizations, they had reserved vacancies for wounded individuals at that particular time also, sir. And a lot of officers were absorbed. They were basically invalidated out of service with a written consent, sir, and then they were given those employments. So basically, there are a lot of benefits with respect to it, sir, but those benefits cannot obviously fulfill the loss that the individuals are faced, sir. लॉस तो खैर उन्होंने देश के लिए अपना शरीर का अंग दे दिया, तो ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी बिग सैक्रिफाइस. बट जो हम कर सकते हैं वो दे शुड बी एटलीस्ट एज यू सेड रिहैबिलिटेटेड एंड whatever best can be done for them. My request would be, if any of you while serving the motherland faces this kind of an issue, please get your paperwork done properly so that you get the due and deserved benefits which are for yours and which are as a gratitude from all of us to whom you have made the sacrifice for. And Certainly, sir. and I thank you, Advocate Bali, for joining us today and giving us your time on this very important aspect.